धन्यवाद. Namaste. Good afternoon. Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandviya ji. Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Professor S.P. Singh Baghel ji. Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of Assam, Shri Keshav Mahanta ji. Dr. Basant Garg, esteemed invitees, senior officials, team leaders from the state governments, members of the industry, academics, and friends. 1.5 दिन के आरोग्य मंथन को आज हम समापन की तरह अब ले जा रहे हैं. जैसे कि डॉक्टर गर्ग ने बताया, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत हुई, चर्निंग हुई, थिंकिंग हुई, और जो उसमें से निकल के आएगा वो हम सबको गाइड करेगा कि इन 2 कार्यक्रमों का, इन 2 स्कीमों का, इन 2 मिशंस का आगे स्वरूप क्या हो, इसमें और स्ट्रेंथ कैसे आए और ताकत कैसे आए, और सेवा इन मिशंस के द्वारा हम देश की कैसे कर सकें. These are 2 very major flagship programs of the government. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, fascinating, largest health insurance scheme in the world, doing wonders with the full support from all of you. And then path-breaking Ayushman Bharat digital mission, which has caught the imagination of the world. These are true, very, very brilliant programs that this nation is pursuing under the leadership of the Honorable Prime Minister. जब जो डिस्कशंस आगे बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम सबको जो हुआ है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस का हुआ है. एक दूसरे से सुन के और जो प्रदर्शित किया गया, सिखाया गया, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फ़ायदा हम सब के लिए वो होगा. और उम्मीद करूँगा कि इसको एक सिंपल कंपाइलेशन डिजिटल फॉर्म में ही चाहे हो, वो सामने रहे, ताकि जब हम अपने अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाएं, अपना रोल अदा करें, चाहे हम स्टेट में हैं, चाहे हम सेंटर में हैं, चाहे हम एकेडमिक्स में हैं, NHA में हैं, वो सारी सोच जो है वो रिफ्लेक्ट हो. इवन नाउ देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट नुआंसेस अबाउट द आयुष्मान भारत, PMJAY, NABDM. हम अलग अलग तरह से करते हैं. हमने कहीं पे यूनिवर्सल प्रोग्राम हो गया है, कहीं पे पब्लिक सेक्टर ऑलमोस्ट एंटायरली डोमिनेट करता है, जैसे JNK की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, कहीं पे प्राइवेट और एकदम बराबर की भागीदारी है. इसी तरह से डिजिटल मिशन में भी जैसे आप अडेप्ट कर रहे हो, जैसे आपने शेयर किया इन प्रोग्राम्स में, देयर आर नुआंसेस एंड वी नीड टू लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ईच अदर. टू मी दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फॉर ऑल ऑफ अस and particularly for us in the ministries and the government system of the country. However, there are 2 or 3 additional points that I'll leave for your kind consideration. एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की 2023 की WHO और वर्ल्ड बैंक की कंबाइंड रिपोर्ट है. उसको हम ध्यान से जब देखते हैं तो UHC का टारगेट जो है 3.8 है फॉर SDG, 3.8.1 and 0.2. सप्लाई साइड में सर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा. सप्लाई साइड में वी हैव डन वेल इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, communicable diseases, we are okay. But clearly, we are not in good shape in these reports with regard to non-communicable diseases. So supply side में hypertension, diabetes की शुरुआत है. I think speed भी बढ़ रही है. लेकिन कैंसर में मेहनत करनी पड़ेगी. अर्ली कैंसर डिटेक्ट करना होगा. कल एम्स में एक एग्जीबिशन में माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहब थे और वहाँ दिखाया गया कि अर्ली स्टेज में जो आने चाहिए, इवन इन दैट सेंटर ओनली 20%, 25% कैंसर के मरीज आते हैं. अर्ली डिटेक्शन नहीं होगी तो आउटकम बेटर नहीं होंगे और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे. तो हमें मेहनत करनी होगी कि ऑन द सप्लाइड साइड, ऑन द डिटेक्शन साइड, ऑन द कवरेज साइड हमारे NCD की में प्रोग्रेस हो और इसके बारे में सोच बढ़ती रहनी चाहिए. आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कि ये काम खास कर किया जाएगा. एंड ऑफ कोर्स देयर आर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
medical colleges that are there at the secondary and the tertiary level. इसी तरह से emergency and trauma की reduction, mortality due to accidents and trauma is also an indicator reflected in the SDG, and we have to apply mind on that. My second submission is what I said yesterday also, is to plead with the private sector to increase your presence in tier 2, tier 3 cities in particular, and tell us and guide us how that can be made possible. And within that, how we can get more FDIs also into creating a very formidable healthcare infrastructure in the private sector, because we now have a partnership under PMJAY and ABDM. We are one system with specific roles, relative strength in certain areas, but we are one system, and therefore increased number of beds, doubling the beds in about 5 to 6 years to 8 years, from about 12 to 14 lakhs to about 30 lakhs is one goal. And also those hospitals and chains that are outside the PMJAY system even today, we would urge with them with folded hands to please join, because this is the scheme, the system of our nation which is going to go forward. And as it moves forward, it will take care of the fragmentation that still exists in some form with CGHS scheme, with the ESI scheme, and some state level schemes. Ultimately, we are all going to join into this Brahmaputra, the rivulets will join, and therefore the private sector should please come forward and be part of nation building in this regard. My last suggestion today is to consider also one aspect that we have really not made good use of, and that is to make strategic purchase to lower the cost of care even further. By strategic purchase, we mean that you need, let's say, stents for your state. आप ही खरीद के दे दीजिए, एक जना प्रोक्योर करेगा तो हमें बिल्कुल राइट कॉस्ट पे मिलेगी, अलग अलग करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस स्ट्रेटेजिक परचेज का नोशन शुरू से ही इस स्कीम में था, लेकिन इसको हम अब करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कोई भी पैसा जब बचता है और वो सेवा में लगता है, वो एक बजट की तरह ही होता है। तो आई थिंक टाइम हैज़ कम दैट वी टेस्ट द पैराडाइम ऑफ स्ट्रेटेजिक परचेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस to make it available for both the public and the private sector under these missions, and then demonstrate that we can actually get more buck for the money. With these suggestions, I'm honored to be here. We look forward to your suggestions. We are in a dialogue. We are continuously striving under the stewardship of the Honorable Minister to continue to improve it. And indeed, at 5 years, we are looking forward to significant improvement, refining, review, revamping, and re-energizing the mission. Both the missions, in particular, the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana scheme. Thank you very much. Jai Hind.